Good morning, all of you. Welcome back to the channel. So here we are starting with the NASA's video for 4th of September 2023. So the first important topic is fiscally imprudent policies and populism. They affect the poor. So these are the words of Prime Minister. So in an interview ahead of the G20 summit, this is what he has highlighted. And he has warned the states against such types of plans जो fiscally imprudent है and populism elements ज़्यादा involved हैं. So again, populism is because of the political elements. So ये चीजें should not be a part of the plans जो specifically poor people के welfare के लिए target करते हैं. Apart from this also जो बाकी सारी policies है उनमें भी ये दो एलिमेंट्स एटलीस्ट नहीं होने चाहिए. सो ही डिसमिसेस द रिएक्शंस अगेंस्ट होल्डिंग द मीटिंग्स इन कश्मीर एंड अरुणाचल इन द रन अप टू द समिट. क्योंकि अगेन कश्मीर की अगर हम बात करें तो अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद एक वो पूरा इशू चल रहा है सिक्योरिटी के अराउंड. अगेन कंसर्न ज्यादा है उस एरिया में एंड अरुणाचल प्रदेश में भी अगेन थोड़े सिक्योरिटी वाले कंसर्न है. सो ही बेसिकली डिसमिसेस जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं कि वहां पे क्यों मीटिंग्स हो रही हैं. सो this is one thing. So apart from this, he has also highlighted again, India had been sensitive to neighbors like Sri Lanka, which were going through crisis, and he also mentioned about their domestic situation also. So this was another element highlighted by him. So यहाँ पे in detail आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि इंडिया ने क्या steps लिए when it comes to the welfare measures, the developmental measures in Sri Lanka during the time period when it was going through the economic crisis. And then state governments is urged about the fiscal importance and importance of fiscal planning and management. That becomes important. And apart from this, energy security of the world is also an important topic these days. So he says that again, India का जो रोल है, इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को. तो अगेन हमारी जो अप्रोच है दैट इज नॉट वन साइज फिट ऑल अप्रोच. सो प्रिंसिपल इज सिंपल, डाइवर्सिटी इज आवर बेस्ट बेट, वेदर आप सोसाइटी में बात करो या वेदर इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी मिक्स. सो जो बाकी सारी कंट्रीज का पाथवे है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया का पाथवे डिफरेंट होने वाला है. सो डिस्पाइट वी आर हैविंग 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, इंडिया का जो हिस्टोरिक शेयर है क्यूमुलेटिव एमिशंस में it is less than 5%. So this is one of the important data. जब बात आती है contributions to the greenhouse gases emissions, so that is less than 5%. Whereas जब हम global share बात करते हैं इंडिया का in terms of population, that stands at 17%. And despite this, we have left no stone unturned in meeting our climate goals. So role of opposition democracy में कैसे important है? What is their important role in healthy functioning of democracy? So ये आप थोड़ा wider topic है, इसके बारे में आप और थोड़ा सोच सकते हैं. So you can see कि G20 summit के लिए it is being dedicated to that. So Atiti Devo Bhava, a warm welcome to the world's leaders in the heart of India. So it is a global event. It becomes a global responsibility, and ये lockdown की तरह नहीं देखा जाना चाहिए. So here are the suggested routes which you can take. So rise and fall of a Russian warlord. So यहाँ पे again जब हम बात कर रहे हैं, we're talking about Wagner Group's chief. So rise and fall again उनकी क्या activities रही. तो overall आपको ये पता होना चाहिए कि Wagner Group की जब हम बात करते हैं, not just in this Russia-Ukraine war, apart from this उनका बाकी जो wars हो रहे हैं, like Yemen war की आप बात करोगे तो वहां पे क्या रोल रहा है, and Wagner Group again करता क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पर्पस है बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन. सो दिस नीड्स टू बी नोन.
And apart from this, their influence when it comes to the Russian politics, वो आप सर्च कर सकते हैं. So when we talk about measuring hunger across the states, so despite being a major food producer with extensive food security, India में आज के time में हम बात करते हैं nutritional security की. And one of the measures of measuring the hunger is Global Hunger Index. 2022 में India की rank तो जो थी, that was 107 among 121 countries. So we are behind countries like Nigeria and Pakistan. So this is showing कि Global Hunger Index में again the position is not good. And ये कहीं ना कहीं जो इंडेक्स है कॉम्पोजिट मेजरमेंट है, ट्रैक्स अंडर नरिशमेंट ऑल्सो एंड हंगर एट नेशनल लेवल अक्रॉस 3 डायमेंशन. तो 3 डायमेंशन जो है कैलोरी अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी. सो दीज आर 3 इंडिकेटर्स जो यूज किए जाते हैं in formulating this index. And according to the state of the food security and nutrition in India in the world report, nutrition in the world report 2022. So according to this report, India, it is home to 224.4 million undernourished people. So regional level पे disparities भी हैं larger level पे. And apart from this, leveraging the sub-national data that encompasses the 3 dimensions जो global hunger index में use किए जाते हैं, we need to leverage that particular data जब हम state level या union territory के level पे बात करते हैं. So ये हमें help करेगा in evaluating extent of undernourishment कितना है, क्या scale है, and localized scale पे इसको समझना important है, तभी हम इसको again minutely and target manner में इसको address किया जा सकता है. So again ये बहुत important role play करते हैं when it comes to meeting the SDG goal of eradicating hunger and malnutrition. So state hunger index है, again वो compute किया जाना चाहिए same indicators use करके. And जब हम data की बात करते हैं from the National Family Health Survey 5, we are seeing कि जो BMI है undernourishment, it is computed using the NFHS 5 and wave one of the longitudinal aging study. So calculation जो state hunger index है वो involve करता है combining जो normalized value of the 4 indicators using the techniques जो recommend की जाती है by the global hunger index. And state hunger index की जो range है that would lie between 0 to 100. So अगर higher score होगा, it would be more towards 100 value, तो वो indicate करेगा कि there is higher prevalence of hunger in a particular state. And value below 10 ये signify करेगा low hunger. So अब जब हम बात करते हैं different states की, once we have formulated this index, states like Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, उनका score is around 35, which places them in the alarming category. And then states like Gujarat, UP, Assam, Odisha, these are again above the national average 29. So performance in some states ka resembles that of the African nations like Haiti, Niger, Liberia, and Sierra Leone. So this is the situation in such in these states basically जब हम hunger की बात करते हैं. And on the other side we have the UT of Chandigarh जिसका score is 12, Sikkim and Puducherry, Kerala, उनका सबका score is below 16. Then apart from the states की अगर हम बात करें, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, तमिलनाडु, ये सब मॉडरेट हंगर कैटेगरी में फॉल करते हैं. तो अगेन कोविड-19 की वजह से भी सिचुएशन थोड़ी खराब हुई है. सो अगेन ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है सोल्यूशंस क्या लाई करते हैं. गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, जो सिस्टम फंक्शन कर रहा है, पीडीएस सिस्टम फंक्शनिंग, उनकी सोफा कितनी इफेक्टिवनेस रही है, उनमें क्या लूप होल्स हैं, वो एड्रेस करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. So facing the reality, it's important to acknowledge the problem areas and then look for the solutions. So what is the status of the Right to Information Act, RTI Act का status की जब हम बात करते हैं, specifically हम status की बात क्यों कर रहे हैं, because अभी off late digital data protection bill जो आया था उसमें थोड़ा सा जो concerns था, that was one of the concerns was associated with Right to Information Act also. So status की बात करेंगे, क्या reforms required हैं with change times, जो new laws हम लेके आ रहे हैं, and again जो new concerns and challenges emerge हो रहे हैं when it comes to
डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में राइट टू इन्फॉर्मेशन को भी बैलेंस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अगेन वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद दिस, क्योंकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सो यहाँ बात करने वाले हैं कौन से बहुत सारी वेरियस अमेंडमेंट्स हैं आरटीआई एक्ट को जो की गई हैं ऑलरेडी। हाउ हैव द पेमेंट मेथड्स एंड poorly staffed information commission undermined this act? Okay, this is going to be another aspect. Then, has the process of applying for RTI online, क्या उसको और simplify किया गया है, या is the public satisfied with the functioning of the RTI process? जिस तरीके से भी current ये चीजें function कर रही है, are we really satisfied with that or not? So we see कि RTI Act को सबसे पहले हम amendments की बात करेंगे, तो we see कि firstly, apart from allowing certain information to be kept secret for the national security and sovereignty reasons, so ये दो main criteria हैं जिसके basis पे information share नहीं की जाती है if it will compromise with the national security, and secondly sovereignty of India. So RTI Act, it makes one exemption. So exemption क्या है? It prohibits the personal data disclosure of citizens by the government unless there is an overriding public interest in doing so. So जो citizens का personal data उसको तब तक disclose नहीं किया जाएगा अगर डिस्क्लोज करने के बाद कोई मेजर लेवल पे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। सो दिस इज वन क्राइटेरिया, या ये एक एग्जाम्पशन है अंडर दिस एक्ट। सो जैसे कि मैं बोल रही थी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट उसने अमेंड किया है क्वालिफाइड प्रोहिबिशन इनटू टोटल प्रोहिबिशन। तो ये जो क्वालिफाइड प्रोहिबिशन था, मतलब कि अगर लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तभी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, डिस्क्लोज की जा सकती है बाय द गवर्नमेंट, बट अब इसको एज एन एग्जाम्पशन नहीं रखा गया, इसको कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। सो इसकी वजह से जो कंसर्न्स इमर्ज हो रहे हैं, here we have one of the concerns that has been shared by the National Campaign for People's Right to Information। वो बोल रहे हैं कि इस कंप्लीट प्रोहिबिशन की वजह से जो सोशल ऑडिट्स हैं जो हम करते हैं सपोज राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, वो इम्पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि सोशल ऑडिट्स में कम्युनिटी मेंबर गेट्स अ लिस्ट ऑफ राशन बेनिफिशियरीज थ्रू एन आरटीआई रिक्वेस्ट, एंड इंडिविजुअली वो वेरीफाई करते हैं बेनिफिशियरीज के साथ कि बेसिकली जो उनको अमाउंट मिलना चाहिए फूड ग्रेन्स का, क्या उनको वो मिला कि नहीं मिला। सो इसको आप कैसे कर पाओगे, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है थ्रू दिस अमेंडमेंट। एंड देन अकाउंटेबिलिटी पे क्वेश्चंस रेज होंगे ऑब्वियसली, जो बाकी सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे अगेन पर्सनल डेटा इन्वॉल्व है। सो एक ये कंसर्न इमर्ज हो रहा है, एंड पास्ट अमेंडमेंट जो की गई है आरटीआई एक्ट में, दे हैव आल्सो रेज्ड कंसर्न्स लाइक आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया 2019 में, इट गेव यूनियन गवर्नमेंट यूनिलेटरल पावर इन डिसाइडिंग कि हाउ लॉन्ग द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हु हियर द अपील्स अगेंस्ट अनसैटिस्फैक्टरी और एब्सेंट आरटीआई रिस्पॉन्सेज दे कैन सर्व, एंड उनकी सैलरीज क्या होगी। तो अगेन यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ज्यादा देखने को मिला थ्रू दिस अमेंडमेंट। एंड हाउ एल्स इज द आरटीआई एक्ट अंडरमाइंड, और किस तरीके से उसको कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाता है। तो आरटीआई एक्ट इटसेल्फ, इट इज न ओनली वे विच एक्टिविस्ट सी एस ट्रांसपेरेंसी एज इट हैज assured is undermined। सो आरटीआई एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिपेंडेंट है सबॉर्डिनेट रूल्स पे जो बनाए जाते हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो फॉर एग्जांपल जो सिंपल मैटर है, सपोज व्हाट पेमेंट मेथड अ पब्लिक अथॉरिटी कैन एक्सेप्ट if it is left to the states to decide. So some states जैसे कि तमिलनाडु, they are not accepting Indian postal orders, and जो Indian postal orders are basically these are checks which can be bought at post office पे आप उनको खरीद सकते हो, and they are attached to an application as payment। तो again यहाँ पे states की discretion आ जाती है। So IPOs they are generally easiest payment methods माने जाते हैं। सो बाकी सारे जो पेमेंट मेथड्स है जो थोड़े लेस कन्वीनियंट है, like court fee stamps, they can only be purchased at a courthouse, and demand draft of suppose rupees 10, it may require processing fee that is over twice this amount of rupees 10। So tardy appointments to information commissions एक another concern है, like chief the Central Information Commission for the Union Government and various state information commissions जो हैं, they have also undermined confidence in the RTI framework, क्योंकि जो appeals हैं वो उनमें बहुत ज्यादा time लग जाते हैं when it comes to justice। सो ऑनलाइन आरटीआई की जब हम बात करते हैं क्या प्रोसेस सिंप्लीफाई हुआ है नहीं हुआ है, सो अलाउइंग दी आरटीआई एप्लीकेंट्स टू बी फाइल्ड ऑनलाइन लार्जली, अगेन डेफिनेटली उसने हेल्प किया है, जो बैरियर्स पहले एग्जिस्ट करते थे वो रिमूव करने में हेल्प हुई है। बट इंस्टेड ऑफ ऑब्टेनिंग द अनकॉमन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिटीजंस दे कैन सिंपली फाइल योर रिक्वेस्ट ऑनलाइन। आप इजिली जाके आरटीआई रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हो, बट कुछ सारी स्टेट्स ऐसी हैं दे डू नॉट हैव ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल, तो ये चीज होनी चाहिए पैन इंडिया लेवल पे।
एंड यूनियन गवर्नमेंट का आरटीआई पोर्टल है वो 2013 में उसको लॉन्च किया गया. दैट इज ऑल्सो पास्ट इट्स प्राइम. सो while many public authorities they under the government they are on this portal, so filing applications it has become harder. So having an account on the RTI online portal allowed citizens to have their personal particulars filled in each application by default. And now, however, जो facility है to create an account that has disappeared. तो अब basically new accounts नहीं create कर सकते on this RTI portal. So the site forces all the users to enter the particulars afresh each time जब भी वो कोई application file करते हैं. तो again, अगर आपको कोई information चाहिए तो पहले आपको अपनी personal information provide करनी पड़ेगी. And again, वो बाय डिफॉल्ट पहले फिल हो जाती थी, बट अगेन अब आपको हमेशा अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी whenever you are filing an RTI application. So what is the next thing then? What needs to be done? जो प्रॉब्लम एरियाज है अब इनको बैलेंस करना, क्योंकि रेलेवेंस ऑफ RTI एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बियॉन्ड द एविडेंस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या वेबसाइट जो ऑनलाइन पोर्टल की भी हमने बात करी, डिससैटिस्फैक्शन भी ग्रो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द RTI एक्ट at the basic level. So more and more first appeals they are being filed. We are seeing such cases and ये indicate कर रहा है कि people they are increasingly dissatisfied with the information जो उनको receive हो रही है from the public officials under the RTI Act. So कहीं ना कहीं RTI Act it is weakening, and जो most of the damage है they have seen it is not merely from changes in the text of the law but also जिस तरीके से बाकी सारे institutions हैं across different government apparatuses वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं. वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अराउंड क्या डिबेट है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, या क्या चैलेंजेस हैं स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग एट द ग्राउंड लेवल. सो प्लान क्या है बिहाइंड दिस? सो अभी रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई है जो पूरा स्टडी करेगी इस चीज को, एंड काफी सारी रिपोर्ट्स हैं. सपोज लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है 2018 में, इट वाज दे हैव रिलीज्ड ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जहाँ पे उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू उनको एनालाइज किया गया था. नोटेबली कमीशन सबमिटेड कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस जो हैं वो फीजिबल नहीं है विद इन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इसलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमें करनी पड़ेगी टू फिट इन simultaneous election to the Indian constitutional framework. And apart from this, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर लोकसभा के हैं, स्टेट असेंबलीज के हैं, वहां पे भी हमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी. एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स है दैट वुड बी डन. एंड जो कमीशन है ऑल्सो रिकमेंडेड की इट रिसीव्ड रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट. सो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. And with respect to the advantages of holding the simultaneous polls, तो commission ने बोला कि this will lead to saving of the public money, reducing the strain on administrative setup and security forces, timely implementation of government policies possible हो सकेगा, administrative focus रहेगा development activities पे rather than on electioneering. क्योंकि India being such a big country, such a diverse country, हमेशा ऐसा रहता है कि किसी न किसी स्टेट में कभी कभी इलेक्शंस चलते ही रहते हैं. तो ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाते हैं तो ये पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं. अब कंसर्न्स क्या है? सो फॉरमोस्ट कंसर्न जो है दैट इज फीसिबिलिटी क्या है. तो आर्टिकल 83 एंड 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो अगेन जो टेन्योर है लोकसभा का स्टेट असेंबलीज का दैट इज बीन फिक्स्ड फॉर 5 years अनलेस दे आर डिसॉल्व्ड अर्लियर. सो इसके अलावा आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे असेंबलीज को पहले डिसॉल्व किया जा सकता है. सो सबसे पहले अगेन जो टेन्योर है, जो टर्म है, वो भी सेम पेज पे होनी चाहिए. सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर सपोज करो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है मिड टेन्योर के टाइम पीरियड के दौरान ही, तो तब क्या होगा? सो क्या हम तब सेपरेटली इलेक्शंस कराएंगे, या फिर amending the constitution for such a significant change would not only necessitate extensive consideration of various situations and provisions but it would also set a concerning precedent for more constitutional amendments. मतलब कि अभी भी अगर हम थोड़ी बहुत amendments कर देते कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारी situations के अराउंड अगेन डिबेट स्टार्ट हो जाएगा. तो अब किस हद तक amendments करोगे?
एंड आने वाले टाइम में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको और ज्यादा अमेंडमेंट्स करनी पड़े, जो अभी बेसिकली पॉसिबल नहीं हो पाए, या we might not be able to think about something which might happen in future as well around the simultaneous elections. Then apart from this, जो idea है of simultaneous election, it does not square with the concept of federalism also, क्योंकि it is established on the notion कि entire nation is one, contradicting the content of Article 1 of the Constitution, जो ये बोलता है कि India is a union of states. So it will lead to violation of this federal principle. And thirdly, we see कि जो present form of recurrent elections हो रहे हैं different states में, that is beneficial to the democracy also, क्योंकि कहीं ना कहीं allow करता है votes to have their voices heard more frequently. अब हर 5 साल में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन होगा states में भी और जनरल इलेक्शंस भी, तो ये चीजें अभी जो करंट फ्रेमवर्क में पॉसिबल हो पा रही है वो उस सेटअप में पॉसिबल नहीं हो पाएंगी. एंड ऑल्सो जब आप सेम टाइम पे वोट करोगे 5 इयर्स बाद, दोनों स्टेट लेवल के लिए और जनरल इलेक्शंस के लिए भी, तो इश्यूज भी डिफरेंट होते हैं. स्टेट्स के कुछ स्पेसिफिक यूनिक इश्यूज हो सकते हैं जो जनरल लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे ना इतना ज्यादा रेलिवेंट हो. तो अगेन वोटर्स की जो चॉइस है वो उसको कंसिडर करना और देन अकॉर्डिंगली वोट करना एक चैलेंज हो सकता है. एंड इसके अलावा जो चैलेंज है सब्सटैंशियल कॉस्ट, जो नंबर ऑफ ईवीएम्स वीवीपैट्स हमें चाहिएंगे, सिक्योरिटी पर्सनल जो हमें एक साथ एक टाइम पे पैन इंडिया लेवल पे डिप्लॉय करने पड़ेंगे, वो एक लॉजिस्टिकल चैलेंज हमारे लिए होने वाला है. सो ये कुछ बेनिफिट्स जो हैं इफ वी इम्प्लीमेंट साइमल्टेनियस इलेक्शंस एंड द चैलेंजेस अराउंड इट. सो इसके अलावा हमने लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस भी देखी. सो जीडीपी सेंट्रिक व्यू रखने के अलावा अब जो हमारा व्यू है दैट इज इवॉल्विंग एंड दैट इज शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स ह्यूमन सेंट्रिक व्यू. तो जीडीपी सेंट्रिक व्यू थोड़ा टेक्निकल है. आप बात करोगे सिर्फ आप ग्रोथ की बात करोगे, उसमें डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट नहीं होगा. ह्यूमन सेंट्रिक में अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात करेंगे, आप ग्रीन जीडीपी की बात कर सकते हो. यू विल ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से. तो वी विल मेजरली टॉक अबाउट डेवलपमेंट. So far, Aditya L1, it is healthy in the new orbit, and we're getting daily updates. So we expect the mission would be entirely successful. So दीक्षा पोर्टल आपको पता होना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का दीक्षा ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है. इट विल बी ऑफरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की बात की जा रही है एजुकेशन सेक्टर में. सो दीक्षा जो है इट कम्स अंडर द एजुकेशन मिनिस्ट्री. ये ई कंटेंट प्रोवाइड करता है फॉर स्कूल्स थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप्लीकेशन. And again, it is also providing things for visual or hearing challenges as well. तो रशिया यूक्रेन और अभी तो वी आर नॉट सीइंग की चीजें थोड़ी सॉल्व हो रही है, ईस्ट डाउन हो रही है. रशिया ने फिर से अटैक किया यूक्रेन के पोर्ट पे, एंड दूसरी साइड ग्रेन डील पे ऊपर भी बातचीत चल रही है. सो नेटो मेंबर रोमानिया कंडेम्स द अटैक व्हिच टुक प्लेस ऑन इट्स बॉर्डर, एंड मॉस्को रिक्रूट्स अराउंड 2,30,000 पीपल इनटू द आर्मी सिंस स्टार्ट ऑफ द ईयर. तो अभी तो वी आर सीइंग की थिंग्स आर एस्केलेटिंग फर्दर. So we are seeing कि जो foreign institutional investors है वो they are offloading their investments from India because
दे आर नॉट सीइंग एनी ऐसी कोई मेजर प्रॉफिटेबल आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिल रही है. सो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ, क्योंकि यूएसए में वी आर सीइंग कि दे आर इंक्रीजिंग देयर पॉलिसी रेट, बट इंडिया में वी हैव मेंटेन द स्टेटस को, या बोल सकते हो कि जो हमने हमारा जो रेपो रेट है दैट इज अनचेंज्ड एट 6.5%. तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट आर्बिट्रेज है इंडिया के केस में वो इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो तब हम बोल सकते हैं कि जो अभी एफपीआईज इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं विड्रॉ करेंगे दैट टू इजीली, बट दे वुड ऑब्वियसली नाउ प्राइवेट द यूएस मार्केट, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा. तो इसकी वजह से एफपीआई की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम हॉट मनी भी बोलते हैं, बिकॉज वो इजिली इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड इजिली एग्जिट कर सकते हैं. तो इसकी वजह से रुपी के ऊपर जो स्ट्रेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो रुपी इज डेप्रिशिएटिंग बिकॉज ऑफ दिस. Coming to Financial Express newspaper. So some of the African and Asian states are going to be the gainers of the rupee loans soon for the partner nations. So government move to benefit the sanction hit and the forex starved importers. So sanctions जिन countries के ऊपर impose किए गए हैं and जिन countries में again थोड़ा BOP problem बोल सकते हैं, या forex reserves कम हो रहे हैं, उन countries को ये इंडिया का जो स्टेप है ये हेल्प कर सकता है. सो रूपी बोरोइंग फैसिलिटी विल बी फंडिंग द इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, वो बेनिफिट कर सकता है कंट्रीज विद इंटरनेशनल सैंक्शंस. सो अगेन वी आर टॉकिंग हियर एंड अबाउट द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी या डी डॉलराइजेशन. So this is aimed at furthering the goal of rupee internationalization. You can see clearly it has been mentioned. So क्या ये mechanism हमें हेल्प करेगा इन द फॉर्म ऑफ सोवरेन लोन्स इन रुपी और वाया बैंक फाइनेंसिंग ऑफ द इंडिविजुअल कंपनीज, वो अभी हमें इतनी क्लैरिटी नहीं है. सो दोनों एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में रुपी इट वुड रिड्यूस द प्रेशर ऑन द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री स्पेसिफिकली जहाँ पे अगेन इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं. So we have been exploring payment options क्या हो सकते हैं countries के लिए that have made deficits with India and they have difficulty in making the payments in global currencies. तो उनके लिए India is providing them in a way हम बोल सकते हैं solution to them. And यहाँ पे दोनों countries के लिए ये favorable and beneficial होने वाला है. So we are right now हम एक ऐसे framework पे work कर रहे हैं. अभी ऐसा कोई complete framework नहीं ready हुआ, so we working upon these lines. तो टू मच फैंसी अगर हम बात करें, वी आर सीइंग कि व्हाट Shashi Tharoor, he is a Congress MP, has to say. So he says the country is going through tough time now. जब हम बात करते हैं high inflation की, low employment, in fact unemployment record levels पे है. So ऐसे circumstances में to paint fantasies of a distant future that is 25 years from now, it is a bit unfortunate. So again यहाँ पे सिर्फ challenges की बात कर रहे हो या आप बात कर रहे हो, high inflation definitely है, अनएम्प्लॉयमेंट भी रिकॉर्ड लेवल्स पे है, बट अगेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड. तो पॉजिटिव साइड भी एग्जिस्ट करते हैं जब आप बात करते हो रेजिलेंस ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, द बैंकिंग सिस्टम. जब हम देख रहे थे यूएसए में बैंक्स थे वो फेलिंग, उसका इंडिया के ऊपर इतना ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं हो सका. सो दैट वाज बिकॉज ऑफ जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एंड इसके अलावा रेजिलेंस की हम बात करते हैं. तो दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी big positives about the Indian economy. And at the same time China plus one strategy में भी we are seeing कि China के slowdown की वजह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं. सो इंडिया एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि जब हम बात करते हैं अगेन प्रोडक्शन की भी और कंजम्पशन की भी, तो इंडिया offers the opportunity of being a worldwide market. At the same time we have cheap labors, again cheap skilled labor I should say. So ये कहीं ना कहीं कुछ positive and favorable factors हैं which are supporting the growth of Indian economy.
सो इसके अलावा ऑब्वियसली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आप बात कर सकते हो, तो स्टेबल गवर्नमेंट विद डिसाइसिव मैंडेट इज अ रीजन फॉर रिफॉर्म्स। सो किस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, वे रिफॉर्मिंग जहाँ पे रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं। सो जो ग्लोबल बॉडीज है, दे मस्ट रिकॉग्नाइज चेंजिंग रियलिटी ऑफ इंडिया। सो डेट क्राइसिस, इट इज इंडीड अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर द वर्ल्ड, एक ग्लोबल कंसर्न है, and especially developing countries के लिए। So citizens from different countries, they are keenly following कि decisions किस तरीके से लिए जा रहे हैं by the governments in this regard. So decisive mandate important है, political stability भी important हो जाती है, and these are few things which have been highlighted by the Prime Minister in his interview. तो G20 की अगर हम बात करें तो चाइना टॉप पे है गुड्स ट्रेड में among the G20 countries with exports and imports totaling around $6.1 trillion. उसके बाद we have USA, then Germany, Japan, Netherlands and India 9th position पे है। So total service traders की बात करें, they are US, China, Germany, UK and France. तो ट्रेडिंग ब्लॉक की जब हम बात करते हैं, कस्टम्स यूनियन, यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो लार्जेस्ट ट्रेडर है बोथ गुड्स में भी और सर्विसेज में भी अमंग द G20 मेंबर्स। सो G20 रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी, 75% ग्लोबल मर्केंडाइज ट्रेड, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। से कुछ important nitty-gritties है about G20 members, and again comparatively India की कहाँ position, where do we stand? So BRICS में 6 new countries are going to be a part of it. So again उनकी अगर हम assess करें अभी situation को, तो we see कि collectively जो 6 new members हैं उनका GDP share is just 11%. So currently China जो contribute करता है 70% of the BRICS GDP सिर्फ China contribute कर रहा है, वो आने वाले टाइम में डिक्लाइन होगी 62% तक, और इंडिया चिप्स इन अराउंड 13% राइट नाउ, विच विल इंच डाउन टू 12%. सो जो एक्सपेंशन डिसीजन लिया गया है अबाउट द ब्रिक्स, that will be effective from 1st of January 2024. It was announced at the recent BRICS summit, which was held in Johannesburg, South Africa. So 6 countries again: Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE. These are going to be the members. And right now जो BRICS countries हैं, तो उनका share in the global GDP, it is rising to 30% from 26% now, and that of the population would be from 46%. It would increase to 46%. Then again bilateral trade के लिए भी figures दी गई हैं for the 6 new countries and members. So we see कि जो new members है उसमें Saudi Arabia, it will be the biggest economy, chipping in with 4% of the GDP contribution, followed by Argentina, UAE, Egypt. So again ये जो 6 new members add करने के बाद ब्रिक्स के जो ओवरऑल हम बात करेंगे जीडीपी कंट्रीब्यूशन की, तो उसके ऊपर ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होने वाला, मतलब शेयर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा विद द एडिशन ऑफ दीज 6 न्यू कंट्रीज। सो वी आर सीइंग कि फेस्टिवल बूस्ट की वजह से अगेन सिविल एविएशन इंडस्ट्री को एक मेजर बूस्ट मिलने वाला है। डिमांड टेक्स दी दिवाली एयरफेयर्स टू न्यू हाइज, तो साथ ही साथ डिमांड की वजह से एयरफेयर्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, अगेन न्यू हाइज के वी आर सीइंग कि दे आर मेकिंग रिकॉर्ड्स। सो यहाँ पे कंपैरिजन भी है दिवाली के टाइम ड्यूरिंग 2022 एंड 23 कैसे प्राइसेस डिफरेंट थे। फ्लायर्स डे स्टार्ट, एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, एंड अगेन ये सीजनल बूस्ट रहता है, सीजनल फैक्टर। So Adani Cement is going to scale the green production. So cement, green cement, it is made by reusing industrial waste
लाइक जो स्लैग है, फ्लाई ऐश, उसको यूज किया जाएगा टू मैन्युफैक्चर ग्रीन सीमेंट। एंड जो प्रोसेस है अगेन एनर्जी भी जो यूज की जाएगी दैट विल बी थ्रू एफिशिएंसी मोड्स, जो हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशंस। तो अगेन ग्रीन सीमेंट के बारे में थोड़ा सा आप और सर्च कर सकते हैं। कमिंग टू द मिंट न्यूज़पेपर, तो प्रज्ञान जो रोवर है इट इज टेकिंग अ नैप। एंड रोवर ने सो फार क्या डिस्कवरीज करी है आफ्टर द टचडाउन। सो चंद्रयान 3 कितना सक्सेसफुल रहा, किस हद तक सक्सेसफुल रहा। सो इसरो ने कंफर्म किया है कि जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी है इंस्ट्रूमेंट जो था प्रज्ञान रोवर के ऊपर, उसने डिस्कवर किया है कि लूनर सरफेस पे स्पेसिफिकली सदर्न पोल पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन ऑन द मून। सो विक्रम लैंडर जो है इट हैज रिकॉर्डेड अ मून क्वेक on the lunar surface 26 अगस्त को and found a super thin layer of plasma also lunar atmosphere में। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि मून का जो एटमॉस्फेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम थोड़ी जान पाए हैं एंड द वे ऑब्जेक्ट्स देयर दे वुड रिएक्ट टू द सोलर फ्लेयर्स वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट वी सी ऑन द अर्थ। तो दीज आर पार्ट ऑफ द फ्यू डिस्कवरीज। एंड की ऑब्जर्वेशंस की अगर हम बात करें तो सल्फर मून पे मिलना दिस कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ओरिजिन ऑफ द मून as well as जो past surface conditions रही हैं। and presence of significant amount of sulfur भी हमें help करेगा in understanding volcanic activity on the moon, which in turn ये हमें help कर सकता है knowing about the subterranean lunar water। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सल्फर हमें हेल्प कर सकता है इन इंडिकेटिंग इफ द मून मे हैव सपोर्टेड लाइफ इन द पास्ट और नॉट, मतलब पहले के टाइम में क्या मून के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती थी कि नहीं, तो ये भी हमें सल्फर के थ्रू पता चल सकता है। एंड देन एट द सेम टाइम ब्रिक्स बनाने में भी काम आ सकता है विच इज अ की टू अ फ्यूचर ह्यूमन बेस देयर एज वेल। सो काफी सारी पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो गई हैं एंड सल्फर इट कैन बी पोटेंशियली ट्रैप्ड इन वाटर आइस एज वेल। सो ये सजेस्ट करेगा कि इट्स ट्रेसेस में लीड अस टू पोटेंशियली मोन्यूमेंटल मून वाटर डिस्कवरी एज वेल। so it's monumental, okay। Apart from this, does that mean we are closer to finding elusive water on the lunar surface? So अभी ये बोलना काफी मुश्किल है। So हमें पहले obviously it is important to study before saying and coming to the conclusion. So study the moon's elemental composition, understand water कहाँ पे हो सकता है। तो again sulfur discovery के through चीजें और हम बोल सकते हैं कि we are moving one step forward। सो डिस्कवरी ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है इन मूविंग टुवर्ड्स सच अ डिस्कवरी अराउंड दी वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी कंट्रीज के मिशंस की बात करें तो टू द बिगेस्ट डिस्कवरीज जो पास्ट ईयर में हमें देखने को मिली दैट केम फ्रॉम चाइना का जो चैंगी 5 मिशन था। एंड वन इज अ न्यू लूनर मिनरल जो हमें मिला लूनर सरफेस पे विच इज नेम्ड एज चैंगिसाइट and the other is waterlogged in glass beads from the lunar sample। and India का Chandrayaan 3 का sulfur observation that would bring us closer to detecting more such beads। and NASA ने 2009 and 2020 में confirm किया था presence of lunar water in shadowed craters and sunlit regions। so we are seeing काफी सारी चीजें discover की गई हैं, so we are moving forward in that direction। so क्या आप बोल सकते कि Chandrayaan 3 मिशन कंप्लीट हो चुका है, इट इज ओवर नाउ। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था बिहाइंड दिस मिशन दैट हैव बीन अचीव्ड, वो हम अचीव कर चुके हैं। इसरो ने कंफर्म किया है कि रोवर इट इज गोइंग टू स्लीप एंड इट विल हेल्प कंजर्व द पावर फॉर फर्दर यूज अगर फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ी। सो रोवर के जो सोलर पैनल्स हैं दे विल रिसीव लाइट ऑन द नेक्स्ट लूनर सनराइज 22 सितंबर को, फॉलोइंग विच ग्राउंड कंट्रोल विल ट्राई टू रीएक्टिवेट इट फॉर फर्दर ऑब्जर्वेशंस। Quote of the day is the speed with which we jumped 5 spots from the 10th largest economy to the 5th largest in less than a decade has conveyed the fact that India means business. So it's
clearly showing, again जब हम बात कर रहे थे negatives and positives of the Indian economy, जब हम बोल रहे थे कि we are suffering through the challenge of high inflation, unemployment record level पे है, तो ये कहीं ना कहीं बता रहा है in less than a decade we have jumped five positions. जब हम GDP की बात करते हैं तो again this is more than enough. We don't have to explain a lot of things, and it shows कि जो prospects, future prospects हैं, they are bright. So solar mission जो है आदित्य L1 mission, it is going to study solar corona, जो सोलर सिस्टम का, अगेन सोलर सिस्टम नहीं, सन का जो आउटर पार्ट है, फोटोस्फेयर, जो सन का सरफेस उसको फोटोस्फेयर बोलता है. इट विल बी ऑल्सो स्टडिंग द क्रोमोस्फेयर, जो प्लाज्मा लेयर है इन दोनों के बीच में, सो दैट हम बेटर अंडरस्टैंड कर सके सोलर फ्लेयर्स के बारे में एंड जो बाकी सारे इवेंट्स है जो अर्थली वेदर, अर्थ के वेदर के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारी सैटेलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं. सो अगेन इसके अराउंड हम स्टडी करने वाले हैं एंड एडवांस अलर्ट्स हमें मिल सके रेडिएशन बर्स्ट के बारे में, जो अगेन हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्पैक्ट करते हैं. सो मोर ओवर जो थर्मल जियो इंजीनियरिंग है, इट इज सीन मोर देन जस्ट अ लेजर लास्ट रिजॉर्ट और लॉन्ग शॉट रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज. So it is important to know more about sun's behavior. So सबके लिए it would be a better thing. And science gave us industrial emissions that threaten us. So it may yet offer us new ways to tackle आज के टाइम में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वहां से हमें कुछ नया सीखने को जरूर मिल सकता है. कुछ न्यू डिस्कवरी ऐसी हो सकती है जो हमें मेजर लेवल पे हेल्प करे. Coming to Indian Express newspaper. So we're just going to see the topics जो अभी तक हमने cover नहीं किए हैं. So adopt a Heritage 2.0 scheme. So today country, it is taking immense pride in the cultural heritage that we share and with a profound self-respect. So Virasat bhi, Vikas bhi, which is guided by this principle, our country is galloping in the path of progress and prosperity. So adopt a Heritage 2.0 scheme के जो highlights हैं, inviting the corporate stakeholders, वो again CSR fund के through they can move ahead in this direction, enhancing the safety and hygiene standards for the tourists. That will also elevating the amenities, जो centrally protected monuments है, welcoming ambience at the heritage site for the visitors. Tourism को और boost मिल सकता है, and again it would be fostering economic growth and job creation while preserving India's cultural legacy at the same time. So you can just search more about the features of the scheme. So we are all ready for the G20 summit. You can see red carpet welcome after months of work that involved coordination between various civic agencies. Capital's G20 transformation is complete. So last minute inspections are going on. So again, culturally, you can see कि क्या चीजें की गई हैं, कौन से elements हैं जिनको promote किया जा रहा है. Even talked about कि fountains में शिवलिंग structured fountain setup किए गए हैं. Beautification, transformation. So what's new? You can see सारी चीजें mentioned हैं. जो again important है हमारे लिए from the perspective of examination, वो आप ले सकते हो. Simultaneous elections के बारे में we have discussed it critically, positives and negatives या challenges क्या हैं. So SEBI must answer. यहाँ अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो रेगुलेटर नीड्स टू एड्रेस जो भी क्वेश्चंस रेज किए गए हैं
in the Adani matter, and obviously ये important है if you want to boost investors' confidence. So this matter is sub judice and एक expert committee भी appoint की गई है by the Supreme Court. So उसने outline किया है broadly कि जो scope है and extent of SEBI's investigation, so it is working on this. एंड कमेटी ने कंक्लूड किया है कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ रेगुलेटरी फेलियर, बट बाकी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स है जो पब्लिश की गई लास्ट वीक, हमने उनको स्टडी भी किया, उनके क्या रिजल्ट्स निकले. दे आर प्रोवाइडिंग ग्रैन्युलर डिटेल्स ऑन इश्यूज जैसे कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, इसके अराउंड एक वॉयलेशन देखा गया, स्टॉक मार्केट एक्टिविटी जो बोला जा रहा था कि स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट भी किया गया है, वो कुछ और सजेस्ट करते हैं. तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं फिर बता रही है कि जिस तरीके से अगेन अब इन्वेस्टिगेशन की गई है, वी आर नॉट हैविंग ट्रस्ट इन दैट आल्सो, क्योंकि वहां पे भी हमें गैप देखने को मिल रहा है. तो अगेन जो इन्वेस्टिगेशंस की गई है बाय डिफरेंट कमिटीज, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन, सो रिजल्ट्स ही उनके सेम नहीं आए. तो अगेन अब कौन सी चीज को, कौन सी इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसेस को आप बिलीव करोगे, आप एक्सेप्ट करोगे, वहां पे भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स या ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, तो इसमें अगेन ग्लोबली भी कुछ चीजें विल नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. सपोज विल रिक्वायर मीडिएटिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, facilitating global cooperation, building new institutions. So ये globally भी connected है, not just nationally. So again energy transition को accelerate करना भी important है at the same time, and on that उसके ऊपर कोई डिबेट करने का कोई इशू नहीं है, बट देयर इज नो प्ले बुक रिगार्डिंग द प्रोसेस. इसको हम कैसे करेंगे, मतलब क्या प्रोसेस होने वाला है, तो उसके ऊपर वी आर नॉट हैविंग क्लियर कट थिंग्स, या प्लान आप बोल सकते हो, एंड वन हैज टू बी क्रिएटेड ऑल्सो. So institutions they have to be built जो facilitate करेगा global cooperation को, skill development, technology transfer, and also enable mediation of the domestic and international conflicts that have been inevitably aroused. So were that to happen, I would not think of Mencken every time I reflect on the green transition. So these are some of the important things that needs to be taken into account. So quietly crushing a democracy, हम बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो इसी की active ruling party rivals, they face numerous court cases, paralyzing opposition as crucial election nears. So things are basically unfolding in Bangladesh, and so Bangladesh एक multi-party democracy है. It is being methodologically strangled in crowded courtrooms across this country of 170 million people. So nearly every day we're seeing thousands of leaders, members, supporters of opposition parties, they stand before a judge. So charges, they're usually vague. Evidence is shoddy at best. So इस तरीके से चीजें unfold हो रही हैं, and just months before a pivotal election pitting them against the ruling Awami League, immobilizing effect clearly दिख रहा है. And about half of the 5 million members of the main opposition party, जो Bangladesh Nationalist Party है, they're embroiled in politically motivated court cases. So again, this is not showing कि situation at the ground level is stable, and things जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, मतलब इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन के ऊपर आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस इम्पोज कर रहे हो, एलिगेशंस लगा रहे हो, तो दिस इज नॉट अ साइन ऑफ हेल्दी फंक्शनिंग या हेल्दी स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश. So what is Pirola variant? So COVID-19 cases driven by new variant जिसका नाम है Pirola variant. It is called BA.2.86 और Pirola. It have been reported, बहुत सारी countries में report किया गया है, and
यूएसए में स्पेसिफिकली देखा गया है, यूके में एंड बाकी कंट्रीज में दे आर अनरिलेटेड केसेस देखे गए हैं। सो इसके अलावा सिंह की हाई नंबर ऑफ म्यूटेशंस वो हमारे लिए मेजर कंसर्न है रिगार्डिंग कोविड-19। सो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस, न्यू म्यूटेशंस हो रही हैं, तो वो कब तक की लिए मतलब ऐसी चीजें फंक्शन होती रहेंगी। एंड ऑब्वियसली हर एक नया वेरिएंट हमारे लिए चैलेंज लेके आता है। सो एक्चुअली वायरसेस म्यूटेट कैसे करते हैं ये हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। सो इट इज नेचुरल, सभी जितने भी वायरस एग्जिस्ट करते हैं उन सबके लिए नेचुरल है म्यूटेट करना विद टाइम। एंड जो चेंजेस हो रहे हैं पर्टिकुलरली दे आर कॉमन इन द वायरसेस दैट हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। एंड जैसे कि ऑब्वियसली दिस इज ट्रू इन केस ऑफ कोरोना वायरस एंड जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, तो जिन वायरसेस में आरएनए एलिमेंट एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वहां पे म्यूटेशंस होना पॉसिबल है, लाजमी है। सो वंस वायरस जो हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए हो या डीएनए हो, वो हमारे सेल्स में एंटर करता है एंड वो फिर अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है एंड वो इस तरीके से बाकी सारे सेल्स को इन्फेक्ट करता है। सो जब भी वी सी एन एरर अकर्स ड्यूरिंग दिस कॉपिंग प्रोसेस, तो ये फिर म्यूटेशन ट्रिगर करता है। एंड ओकेजनली जो म्यूटेशन है इट प्रूव्स टू बी एडवांटेजेस फॉर द वायरस ओनली, नॉट फॉर आवर इम्यून सिस्टम, या जो हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स फंक्शन कर रहे उसको फेवर नहीं करता है, म्यूटेशन फेवर करता है वायरस को। तो दैट्स हाउ म्यूटेशन हैपेंस। एंड अगेन कोविड-19 के केस में जो कोरोना वायरस है उसमें भी हमें म्यूटेशंस देखने को मिल रही है, और जो लेटेस्ट वेरिएंट है दैट इज कोरोना वेरिएंट, यूएस और यूके में डेफिनेटली इट्स अ सिचुएशन ऑफ हाई कंसर्न। बम्पर क्रॉप्स येट हाई सीरियल प्राइसेस, तो फिर एक्चुअल रीजन क्या है बिहाइंड द हाई सीरियल प्राइसेस? क्योंकि अगर बम्पर क्रॉप्स देखने को मिल रहा है मतलब सप्लाई साइड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल वी आर सीइंग सीरियल इन्फ्लेशन। सो गवर्नमेंट एस्टिमेट्स जो है ऑफ रिगार्डिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन दे डू नॉट स्क्वायर विद अ डबल डिजिट सीरियल इन्फ्लेशन, बिकॉज हम देख रहे हैं कि जो इम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट कब्स लगाए गए हैं, स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगाई गई है, वो भी कहीं ना कहीं पॉइंट करता है टुवर्ड्स ग्रेन शॉर्टेज। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर बम्पर क्रॉप्स हैं तो इसका मतलब है कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है, एक्सपोर्ट कर्ब्स इम्पोज कर रही है, स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स लगा रही है, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट कर रहा है कि ग्रेन शॉर्टेज तो है। सो अगेन ये थोड़ा अगेन यहाँ पे भी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर अभी वी आर सीइंग राइट नाउ बम्पर क्रॉप्स देख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में वी विल सी कि जो सीरियल प्राइसेस हैं वो कम होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लैग एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, जब साइमल्टेनियस इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं एंड हमने ये बात भी की कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट डिस्कस किया गया है कि ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जहाँ पे स्टेट्स का असेंट लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो पावर टू अमेंड इनफॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंड है उसको अमेंड किया जाता है थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड कन्वेंशंस एस्टैब्लिश्ड थ्रू यूसेज। सो एग्जाम्पल सपोज जो प्रोसेस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी, सो कॉन्स्टिट्यूशन ये रेफर करता है कि कंसल्टेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया है दिस इज टू द इफेक्ट कि कंसल्टेशन का मतलब है कॉन्करेंस। सो ये इंटरप्रिटेशन दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ जो कोलिजन सिस्टम है हमारे इंडिया में रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड वर्चुअली चेंज इन द लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So if we talk about the process behind the constitutional amendment, so constitution prescribe कर रहा है three different standards for amending different provisions. So एक तो आप कर सकते हो simple majority के through, तो बाकी बहुत सारे ऐसे provisions है constitution में which can be amended through simple legislative process है, and इसमें again ordinary legislations involved हैं, and this is done through majority of those who are present in voting, and they इसमें कोई again quorum required नहीं होता simple majority के केस में। So अगर हम यहाँ पे ले आर्टिकल 368, it does not directly make a list of such less significant provisions. So ऐसा कोई हमारे पास proper list नहीं है of the provisions जिनको आप simple amendment के through बेसिकली सिंपल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड कर सकते हो। तो थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रोविजन जो हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 368, क्रिएटिंग सेपरेट कैटेगरी
And special majority, this is the second process, second method through which amendment can be done. So for amending the provisions that do not fall under the first category, Article 368 requires कि जो amendments हैं, the bills they are passed in both the houses of parliament by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. तो ये होती है special majority. And total membership also means कि जो total members of the house, irrespective of any vacancies or absentees at the moment. So ratification by the states कौन सी cases में होता है? थर्ड ऐसी कैटेगरी, जो थर्ड कैटेगरी है उसमें provisions they need not just special majority but आपको again states की consent भी important है. So यहाँ पे states की ratification important हो जाती है by at least half of the states. सारी states की ratification नहीं चाहिए, only half of the states. So only after states ratification ही amendment complete होती है. So जो पहली दो categories थी simple और majority, simple majority and special majority वाली, उसमें आपको स्टेट की रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होती है. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 2014 में जो किया गया, उसमें एस्टैब्लिश द नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन, एनजेसी एस्टैब्लिश किया गया था थ्रू दिस अमेंडमेंट, जिसमें we received the ratification from 16 state legislatures before receiving the president's assent. So similarly 2016 में 122nd constitutional amendment किया गया, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था जीएसटी को, वो उसमें हमें 23 states की ratification मिली. So again एक important सुप्रीम कोर्ट केस है कि ऑटो हॉलन केस ऑफ 1992, उसमें जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, that was the question of ratification emerged as important under this case. So इसमें भी one of the grounds on which constitutionality जो 10th schedule का था, it deals with the disqualification of the elected representatives. इसको challenge किया गया था and was challenged was the amendment was not ratified by the states. So 10th schedule again जो disqualification of the elected representatives इसके बारे में बात करता है, तो इसमें challenge ये किया गया कि states ने ratification नहीं provide की गई, तो इसलिए 10th schedule is not again constitutionally valid. So amendment among other things sought to bar the jurisdiction of the court in any matter which is connected with the disqualification process. And so बाकी सारे जो apart from this entrenched provisions हैं, Article 368 6 parts ऐसे list करता है, define करता है clearly that have additional safeguard for amending them. So इसमें we have Article 54, 55 which deals with election of the President of India, Article 73 and 162 which is about executive powers of union and states. then ये articles हैं, article this, these are the other categories. Then NK Singh sir, we have an interview. So we bought the facile story that you could be a great soft power ignoring the hardware. That was a very fragile assumption. So economist NK Singh, he talks about reforming multilateral development banks, जो again एक बहुत important global agenda है आज के time में, finding ways to harness private capital. And thirdly, challenges of helming the G20 expert group. So three main areas है जिनके round is talked about during this session. So he says ki the big challenge it is of President of the World Bank and other presidencies they faces how to change work culture, processes and procedures to be able to harness substantially enhanced private capital. So he says it is true that we were deeply conscious of our moral duty, that while we need to address the problems of climate, this should not be at the expense of compelling needs of poverty, particularly countries जहाँ पे large vulnerabilities exist करती हैं. So he says कि can we really harness dual forms of capital, hybrid capital और blended finance. तो यहाँ पे अब आपको बहुत important है, दोनों terms बहुत important है. Hybrid capital क्या होता है, blended finance क्या होती है, कहाँ उसकी real life में applications है. So that is why we have recommended new mechanism which is flexible enough under जो multilateral development banks है जो guarantee करते हैं, use करते हैं and accountability में भी वो चीज हमें help करेगी. तो हाइब्रिड कैपिटल, ब्लेंडेड फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के लिए स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है. So UPI they crosses the 10 billion mark. A look at India's key foreign policy cell, digital public infrastructure. So United Payments Interface crosses 10 billions in volume of transactions. So this again we
we hit a new milestone for the payment services, which is not just being used extensively domestically, but internationally UPI payments आप use कर सकते हो जिन countries में allowed है. So UPI इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है आज के टाइम में. तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके और बाकी क्या एग्जांपल्स हैं. आधार इज वन ऑफ देम. जैम ट्रिनिटी की आप बात करोगे, देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स. So these are few examples of the digital public infrastructure. And apart from this, a digital governance बहुत important area है, especially as it aspires to assume leadership role in global south. So again यहाँ पे इंडिया का जो digital governance setup है, framework है, पूरा system is working, that also becomes important. And India wants to play a key role in deployment of the digital public infrastructure and plans to build and maintain the global digital public infrastructure repository also, जो एक virtual repository होगी of these DPI voluntarily shared by the G20 members. So here, through this, हम basically share कर सकेंगे the practices and experiences of development and deployment of the DPIs, which may also include relevant tools, and बाकी countries को उससे help and learnings मिल सकती हैं. So here we're talking about the digital public infrastructure, how it has become a part of India's foreign policy also. And UPI की हमने बात करी, digital governance की हमने बात करी, and even talked about global DPIR as well. So that's all for the day. Thank you so much for joining us, and do subscribe to the channel. Keep watching.